Hello, genius brains. How are you all? Your learning buddy Prajita is here with your Environmental Studies Class 4 Acknowledge Series Amit Publishing House. So, children, today let's start with chapter number 12. And the chapter is The Food We Eat. Yes, as we all know, हम सबको पता है कि हम बिना फूड के नहीं रह सकते, बिना खाना खाए कैसे रहेंगे. We need food to live, to survive. We need food. And what is that food that we eat? We are going to read in this chapter. Food is one of our most basic needs. It gives us energy to work, play, read and even think. एक बेसिक नीड है फूड हमारे लिए. और ये जो फूड है ये क्या करता है? ये फूड हमें एनर्जी देती है. और एनर्जी देती है किसके लिए? वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए, रीड, इवन सोचने के लिए भी एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस फूड? Food from plants. The food we eat comes from plants and animals. Plants are our biggest source of food. जो प्लांट है वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है फूड. सीरियल्स. अब क्या क्या मिलता है हमें इस प्लांट्स? Wheat, rice, oats, ज्वार, maize and bajra are the cereals or the grains that we commonly eat. अब इनमें से कुछ चीजें तो very common, they are very common. All these things are very common. आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी. When mama cooks in the kitchen, then you must have seen there also. You must have asked your mother also, what is this? So oats, maize, rice, wheat. Rice तो सब खाते हैं. Wheat भी सबको पता है, गेहूं जिससे आटा बनता है. And oats, nowadays people have become so health conscious, so they eat oats regularly. And maize, मक्की के दाने होते हैं. So these are some commonly eaten grains. Wheat is ground into flour and used to make rotis, bread and naan. As I told you, ये जो गेहूं है, wheat है, इसका आटा बनता है और फिर इससे bread बनती है, रोटी बनती है, नान बनता है. Rice is also widely eaten. Rice भी commonly सब भी खाते हैं. It is also used to make food stuff like dosa, idli, etc. जो इडली डोसा भी बनता है वो भी राइस को पीस के उसका बैटर बनाया जाता है. After that the idli dosas are made. Oats are usually eaten for breakfast. Yes, in breakfast many people they eat oats. Now pulses. अभी जो दाल भी सब खाते हैं. Dals like मूंग, उड़द, मसूर, kidney beans जिनको कि राजमा बोलते हैं, dry peas etc. are called pulses और lentils. जो दालें होती है उन्हें क्या बोला जाता है? pulses बोलते हैं या lentils बोलते हैं. देखिए, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, kidney beans, राजमा. Okay? Now vegetables. These are the foods which we eat. Fine? Now we come to the vegetables. पहले हमने क्या पढ़ा? Pulses, cereals, then pulses. Now we come to the vegetables. Beans, carrot, onion, potato and tomato are some common vegetables. They are cooked or eaten raw as salads. Now see, there are many more kinds of vegetables. अभी कुछ commonly some common vegetables are written here. Beans, carrots, onion, इनको हम कच्चा भी खाते हैं as salad और बना के भी, पका के भी खाते हैं. Now we come to the fruits. See, so many different kinds of fruits. Apples, bananas, cherries, oranges, pineapples and strawberries are some popular fruits. Fruits are of two types, fleshy and dry. अब फ्रूट्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन टाइप्स उनके टू होते हैं. एक होता है फ्लेशी और एक होता है ड्राई. मैंगो एंड पपाया आर फ्लेशी फ्रूट्स बिकॉज इसमें गूदा जिसे कहते हैं ना, फ्लेश बहुत ज्यादा होता है. Raisin, apricot and almonds are
ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं ना, we cashew, raisins, apricot and almonds. These are all dry fruits. इसमें फ्लेश नहीं होता है. Fruits are eaten raw. We also drink juice made from different fruits. और अलग अलग fruits का हम juice भी पीते हैं. Spices. Now to the spices. जिसके बिना कहते हैं कि खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है. मसाले. Cardamom, clove, cumin seeds, pepper, bay leaf, turmeric and chilies are some common spices. Elaichi, cardamom, elaichi, clove, long, cumin seeds, jeera, and pepper, kali mirch, bay leaf, tej patta, and turmeric is haldi, chilies, mirch. Yes, कुछ common spices. They make our food colorful and spicy. Yes, they make our food very colorful also and spicy too. The Indian food is popular all over the world because of the spices that we put in it. जो हमारा Indian food है ना, all over world क्यों popular है? क्योंकि Indian food में ही सबसे ज़्यादा spices use किए जाते हैं. Just because of these spices, Indian food is popular all over the world. You see, spices add color and flavor to our food. So colorful they are. Spices अपने आप में कितने colorful? Beverages. Leaves of some plants are used to make drinks. These drinks are called beverages. Beverages किसे बोलते हैं? लीव से, कुछ प्लांट्स की लीव से कुछ ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं बेवरेजेस. टी एंड कॉफी आर पॉपुलर बेवरेजेस. कॉफी पाउडर इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स. कॉफी बीन्स आती हैं और उस कॉफी बीन्स को क्रश करके कॉफी पाउडर बनाया जाता है. नाउ टी इज अ रिफ्रेशिंग बेवरेज. ज्यादातर लोग टी को ही एक रिफ्रेशिंग बेवरेज मानते हैं. नाउ फार्मिंग. How farming is. Foods such as fruits, vegetables, cereals, pulses, oilseeds and spices are grown by farmers in the fields. अब ये सब जो चीजें हम खाते हैं, ये कहाँ से आता है? ये farmers उगाते हैं fields में. Plants which are grown over a large area are called crops. एक प्लांट बहुत बड़े एरिया में, वो एक प्लांट ही अगर उसकी खेती की जाती तो उसको कहते हैं क्रॉप. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन. और इस क्रॉप को ग्रो करने के प्रोसेस को कल्टीवेशन बोला जाता है. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. पूरे साल सेम क्रॉप्स नहीं उगते. कुछ क्रॉप्स, सब क्रॉप्स का उगने का अलग अलग टाइम है. नाउ सी हाउ दिस कल्टीवेशन फार्मिंग इज डन. स्टेप वाइज यहाँ पे आपको बताया गया है विद द पिक्चर. स्टेप 1 में क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लोइंग द फील्ड. खेत को जोतना, उसकी जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए. 2-3 बार उस खेत को प्लो किया जाता है. देन स्टेप 2, सोइंग द सीड. सीड्स डाले जाते हैं उस प्लोड फील्ड. देन इरिगेटिंग द क्रॉप्स. उसमें कितना पानी डालना है, कैसे उसकी गुड़ाई होनी है, ये सब चीजें इरिगेशन होता है. इरिगेटिंग द क्रॉप. आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग द क्रॉप. जब क्रॉप पक जाता है, पक के तैयार हो जाता है, उसको काटना. देन स्टेप 5 इज थ्रेशिंग. इसमें से सीड्स अलग करना और उसकी हस्क उसका अलग करना. एंड स्टेप 6 इज विनोइंग. विनोइंग. व्हाट इज विनोइंग? देखिए ऐसे उसमें करके उसको हिलाते हैं एंड द हस्क गोज अवे and the seed grain comes out. एक तरफ हस्क इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ grain इकट्ठा हो जाता है. Fine? So these are some of the steps. The journey of food. Now how does food travels from one place to another? हम तक कैसे पहुंचते हैं? The farmer first prepares the field. जैसा कि अभी आपने देखा, field को prepare करता है. He plows the field and adds manure and fertilizers. फील्ड को प्लो करने के बाद उसमें मैन्योर, फर्टिलाइजर, खाद, ये सब ऐड करते हैं. देन ही सोज द सीड्स.
फिर वो seeds लगाता है. After a few days, the seeds germinate and small plants appear. तो seed में से germination होता है और छोटे-छोटे plants दिखने लगते हैं. The farmer waters the crop regularly. आप उसको irrigate करना होता है तो उसको water करता है regularly, उसमें पानी डालता है. He sprays insecticides and pesticides to keep the crops safe from insects and pests. अब उसमें दवाइयाँ भी छिड़कनी पड़ती है जिससे कि वो insects और pests से बचा हो. The crops grows in about 6 months और 6 months में वो crop उग जाता है. They are then ready to be cut. अब उनको cut करने का टाइम हो जाता है. वो पक जाती है क्योंकि पक के तैयार हो जाती है. The cutting of crops is called harvesting. जब crop को cut किया जाता है उसे कहा जाता है harvesting. After the crops have been harvested, grains are separated from the plants. Plant में से grains को अलग किया जाता है. This is called threshing. Then the husk is removed. This process is called winnowing. Husk को अलग निकाला जाता है, grains को अलग किया जाता है. इसको winnowing कहते हैं. The grains are then packed and are ready to be supplied to the market. अब grains pack होते हैं और ready हो जाते हैं market में जाने के लिए. Small farmers take the crops to the wholesale market in tractors or bullock carts. अब ट्रैक्टर्स या बुलक कार्ट्स में जो छोटे फार्मर्स होते हैं ये होलसेल मार्केट में लेके जाते हैं इस क्रॉप. बिग फार्मर्स सेंड देम बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स और जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो इसको ट्रक्स या ट्रेन्स में भेजते हैं. नाउ सी हियर बनानास बीइंग टेकन टू अ होलसेल मार्केट. ये सारे बनानास तोड़े गए हैं, अब इसको होलसेल मार्केट में लेके जाया जा रहा है. सो नाउ चिल्ड्रन सम एक्टिविटी टाइम हियर. The journey of food grains from the field to our homes is given below in a jumbled order. Number the steps correctly. अभी हमने food grain की journey को पढ़ा ना, कैसे फ्लो करता है फार्मर फील्ड को, उसके बाद क्या 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 स्टेप्स फॉलो करता है, उसके बाद जाके ये क्रॉप तैयार होता है, फिर मार्केट में आता है. सो वही प्रोसेस यहाँ है लिखा हुआ बट जम्बल्ड अप. सबसे पहले क्या होता है और लास्ट में क्या होता है, दैट वी हैव टू पुट इन एन ऑर्डर. एक ऑर्डर में हमें लिखना है. सो लेट्स नंबर इट करेक्टली. हमें यहाँ नंबरिंग करनी है करेक्ट नंबर. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट इट चिल्ड्रन. ग्रेन्स सबसे पहले क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर, सबसे पहले फार्मर क्या करता है, ही प्लोज द फील्ड. सो फाइंड इट आउट. द फील्ड इज प्लोड. So we put number 1 here. Okay? Flow करने के बाद क्या करता है, वो seeds डालता है उसमें. The seeds are sown. So this is number 2. Fine? After the seeds are sown, उसके बाद वो क्या करता है, the crop, वो जो crop है उसको harvest किया जाता है. Fine? उसके बाद harvest करते नहीं, harvest करते हैं, yes, harvest करते हैं. फ्लो, सबसे पहले फ्लो किया, उसके बाद सीड्स को डाला एंड आफ्टर दैट द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. सो वी पुट नंबर 3 हियर. एंड देन व्हाट हैपेंस, इट इज टेकन, इट इज थ्रेश्ड. उसमें से ग्रेन्स को, प्लांट में से ग्रेन्स को अलग किया जाता है. सो द ग्रेन्स आर थ्रेश्ड. नंबर 4. आफ्टर थ्रेशिंग विनोइंग इज डन. नंबर 5. After winnowing, what happens? Grains are taken to the wholesale market. Number 6. अब wholesale market में जाने के बाद क्या होता है? Shopkeepers buy grains from the wholesale market. अब shopkeepers जो हैं वो grains wholesale market से अपने shop के लिए खरीदते हैं, shop में रखने के लिए. This is 7. And the last thing is people buy food grains from grocery shops. अब हम लोग जाके ग्रोसरी शॉप से उसको खरीदते हैं ग्रेन्स. सो दिस इज द लास्ट वन, नंबर 8. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर इन विच द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड कम्स टू आवर होम्स. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट्स नेक्स्ट? द ग्रेन्स मे आल्सो बी टेकन डायरेक्टली टू द फैक्ट्रीज. अब फैक्ट्रीज में भी डायरेक्टली लेके जाया जा सकता है. Here the grains are cleaned and packed. The packets are labeled.
Then they are sent to the wholesale market. Okay. Now to the market. A market में the harvested crops have to be sold quickly. जल्दी जल्दी उसको बेचना भी है. Harvested crop. Since some vegetables and fruits get spoiled quickly, they cannot be stored for too long. बहुत लंबे टाइम तक उनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि कुछ fruits and vegetables जल्दी खराब हो जाते हैं. These perishable fruits and vegetables are quickly transported to the mandi for sale. अब इनको जल्द से जल्द क्या किया जाता है, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो जल्दी खराब होने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनको मंडी तक पहुंचा दिया जाता है. Okay? Non-perishable food items like grains and pulses are packed in bags and sold in bulk. अब जो खराब न होने वाले आइटम्स हैं, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, उनको बड़े बड़े बैग्स में पैक किया जाता है और उसको बल्क में बहुत सारा एक साथ बेचा जाता है. Grocers buy bags of grains and pulses in large quantities and take them to the shop. अब जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बल्क में बहुत सारा ग्रेन्स और पल्सेस इकट्ठा खरीद के अपने शॉप्स में रख लेते हैं. They buy only as much as they can sell. जितना वो बेच सकते हैं उतना ही वो खरीदते हैं होलसेल मार्केट से. Sometimes middlemen buy the produce at a mandi and supply it to different grocers of their area on a regular basis. कभी-कभी एक middleman भी क्या करता है, वहां से मंडी से खरीद के different grocery shops में ये food grains देते हैं. Now community eating. What is community eating? We eat food with our family every day. हम daily अपने family के साथ बैठ के खाना खाते हैं. However, there are special occasions when we call our extended family and friends for meals at home or even eat outside at a particular place. लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है, जो हमारे साथ नहीं रहते हैं लेकिन हमारी ही फैमिली का पार्ट होते हैं, लाइक हमारे चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, ये सब हमारे साथ ना रह के अलग से रहते हैं लेकिन हैं हमारी फैमिली के मेंबर्स, तो इनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. ये कुछ स्पेशल ओकेजन्स में ही एक साथ मिलते हैं. Eating food on special occasions is known as community eating. अब स्पेशल ओकेजन्स पे एक साथ खाने को ही क्या कहा जाता है, कम्युनिटी ईटिंग. लाइक लंगर. Langars are free meals that are served in gurudwaras. At the langar, people irrespective of their caste and status eat together. अब लंगर जो गुरुद्वाराज में लंगर चलते हैं वहाँ पे कोई कास्ट कोई स्टेटस नहीं देखा जाता है, कोई भी आके किसी भी कास्ट का किसी भी स्टेटस का आके बैठ के खाना खा सकता है. The food served at a langar is purely vegetarian. There are people who prepare food, others who serve the food once it is prepared, and another group who ensures that the place is cleaned after the food is served. Children, अगर आप कभी गुरुद्वारा गए हैं और आपने लंगर खाया तो आपने देखा है क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे. कुछ लोग होते हैं जो खाना बना रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाना सर्व करते हैं सबको आके, and there is a group of people जो खाना खाने के बाद वहाँ पे सब कुछ क्लीन करते हैं. So in this way the langar is served. The langar was started by Guru Nanak Dev. It combines three noble principles: charity, community service and social equality. लंगर किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव जी ने ये लंगर शुरू किया था और इसमें थ्री नोबल प्रिंसिपल्स आते हैं. क्या? तो चैरिटी, सेकेंडली कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी के लिए कुछ करना, एंड द थर्ड थिंग इज सोशल इक्वालिटी, किसी भी कास्ट स्टेटस के लोग आके एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. Daris are neatly spread out for people to sit on. People are served in disposable plates made of dried and pressed leaves.
अब क्या होता है, दरियाँ बिछाई जाती हैं वहाँ पे और फिर लोगों को बिठाया जाता है और उनको डिस्पोजेबल प्लेट्स में, जो कि ड्राइड लीव्स से बनी हुई होती है, उसमें खाना सर्व किया जाता है। The tradition, okay, fine. Let's see here. Write down the three occasions when you eat out with your extended family. कौन कौन से occasions होते हैं जब आप अपनी extended family के साथ खाते हैं? या तो आप कहीं गुरुद्वारा गए हैं तो वहाँ पे लंगर में एक साथ बैठ के खाते हैं, और if you have gone, और स्पेशल occasion क्या हो सकता है, if in New Year आपकी extended family आई है and you have gone out, कहीं आप बाहर जाके खाना खाने गए हैं, that is the special occasion, that is your extended, that is the occasion on which you are eating with your extended family. ऐसे ही बहुत सारे occasions होते हैं, दिवाली है, होली है, कोई भी occasion है जिसमें कि आपकी extended family आपके पास आई है, या तो घर में बैठ के ही खाना खाना या कहीं बाहर जाके खाना. Traditional foods. India is a vast country. Each state has its own traditional delicacies that are eaten during festivals. अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और वहाँ पे हर एक स्टेट का अपना एक ट्रेडिशनल डेलिकेसी है. डेलिकेसी मीन्स एक ट्रेडिशनल फूड है, फाइन, विच इज वेरी फेमस, एंड फेस्टिवल्स में तो ये बहुत खाया जाता है. घेवर एंड फिरनी are traditional sweets that are eaten in Rajasthan during Teej and Raksha Bandhan. अब राजस्थान में तीज और रक्षाबंधन के टाइम पे घेवर और फिरनी एक ट्रेडिशनल स्वीट है which is eaten there. Sevia is a special sweet dish that is prepared and served on Eid. ईद में सेवैयां खाते हैं. Then Gujia is a special sweet dish that is eaten on Holi. होली में घर पे, सबके घर पे गुजिया बनती है. ड्यूरिंग नवरात्रास पूरीज, चना एंड हलवा आर गिवन एज प्रसाद. हम सभी जानते हैं ये. पीठास आर स्पेशल पैनकेक्स दैट आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग बिहू. आसाम में जब बिहू बनाया जाता है तो वहाँ पे पीठास बनते हैं. ड्यूरिंग ओनम अ स्पेशल मेला कॉल्ड उनसद्या is prepared. Ansadya is prepared. In it a 9-course meal of 10 to 13 dishes is prepared and served. ओणम में अनसद्या एक मील होता है, स्पेशल मील होता है जिसमें कि 9-course मील ऑफ 10 या 13 डिशेस होती हैं, उसमें वो सर्व किया जाता है. For Pongal, a sweet dish prepared with rice and milk is eaten. देखिए हर जगह का अलग अलग occasion and different food is also there. Reverie, gajak and groundnuts are eaten during winters. Christians eat cakes on Christmas. So, देखा ना आपने, हर जगह की अलग एक डेलिकेसी होती है. At boarding school, अब boarding school में देखिए क्या है. In boarding school, students eat at a mess. जब बच्चे अपने घरों को छोड़ के एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ मिल के रहते हैं, एंड दे कम देयर टू स्टडी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्टेट्स, इवन द कंट्रीज ऑल्सो, एंड देयर दे ईट इन अ मेस. एक साथ बैठ के वो मेस में खाते हैं. द मेस सर्व्स फूड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेन्यू. मेस का एक फिक्स्ड मेन्यू होता है कि कौन से दिन क्या खाना है. The children learn to eat all the dishes that are prepared and served. अब यहाँ पे मेस में, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे मेस में क्या सीखते हैं? To eat all kinds of food, all kinds of dishes that are served to them. Now, midday meal. The Indian government has started a midday meal scheme in government schools. जो government schools होते हैं वहाँ पे government ने एक midday meal scheme चलाई है. This is because many of the students in these schools cannot afford to bring healthy food to school. क्योंकि यहाँ इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं healthy food रोज लाना. The main idea is to promote the right to food, because each and every human being has a right to eat food. सबको right है खाना खाने का right है.
The midday meal has the following benefits. अब midday meal के क्या benefits हैं? It encourages children to come to school. अब बच्चे encourage होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उनको वहाँ खाना मिलेगा, पढ़ाई भी करेंगे और खाना भी मिलेगा. It helps in the healthy growth of the children. It reduces inequality. Inequality भी finish हो जाती है क्योंकि सब एक साथ बैठ के एक ही तरह का खाना खाते हैं. So here I hope you have seen, you have learned that how food is so important to us, or different kinds of food क्या क्या है, and what is a midday meal, what is a langar. ये सब चीजें आज हमने इस लेसन में पढ़ा. So children, now testing time. क्या क्या पढ़ा आपने, क्या समझ में आया आपको? Why do we need food? We need food to get energy, to play, to work, to think, and to read. Where do we get food from? We get food from plants and animals. What do the students learn at mess? At mess, the students learn to sit together and eat different kinds of dishes from all the states, all over the world also, all over India too and all over the world also, because in the mess, the students from different places, they come. Now take the correct option. Which of these are cereals that we commonly eat? अब इनमें से कौन से cereals हैं जिसे हम commonly खाते हैं? Lemon and orange, they are not cereals. Carrot and radish, they are also not cereals. Wheat and oats, all of these. Cereals कौन से हैं? Wheat and oats. So take this one. Which of these are spices we use in our food? Kidney beans and pulses, cardamom and cloves, almonds and walnuts, castor seeds and sunflower. Cardamom and cloves are the spices. Gujia is a special sweet that is prepared for Diwali, Raksha Bandhan, Holi, Christmas. कौन से occasion पे गुजिया बनती है? होली पे गुजिया बनाते हैं घर पे. So take Holi. Now write T for true and F for false. Wheat is ground into flour and used to make roti, bread and naan. Yes, this is true. Write T. Oats are usually eaten for breakfast. Oats हम breakfast में ही खाते हैं. This is also true. Vegetables provide important nutrients to our body. Yes, this is also true. Write down T. Tea is a refreshing beverage. Yes. Many people, they drink tea to refresh themselves. This is also true. Mango and papaya are dry fruits. No, they are fleshy fruits. So this is false. Coffee powder is made from coffee beans. Yes, children, this is absolutely correct. Let's write T here. Now, children, let's do this. Define the following. As you have read in the chapter, बहुत सारी चीजें पढ़ी chapter में, cultivation, then winnowing, threshing, what are crops. So now we have to define these. Crops. What are crops? Plants grown over a large area. जो कि एक large area में जो plants लगाए जाते हैं उसे कहते हैं crop. Cultivation. The process of growing the crop is known as cultivation. Harvesting. The cutting of the crop. जब crops बन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जब उसको cut करते हैं, that is known as harvesting. The cutting of crops. Winnowing. The removal of husk from the grain is known as winnowing. And the last one is langar. Free meals served in Gurudwara is known as langar. Fine? Now let's move further. Answer the following questions. What are the different types of food that we get from
plants. From plants, what do we get? We get fruits, we get vegetables, then fruits, vegetables, cereals, pulses. These are the things which we get from plants. Describe how a farmer grows crops. You have seen that step. वो steps देखे आपने जैसे जिस तरह से farmer crop grow करता है. Do you remember that? Let's recall it once more. Firstly, what the farmer does, the farmer plows the field. Then he sows the seeds. After that, what he does, he irrigates it. He waters the plants, the small plants which come out, he waters them. And after that, it is harvested, it is cut down. And after cutting, the threshing is done. And after threshing, the winnowing is being done. So this is the whole process through which a crop goes. Now, how does the food from the field reach your home? Now, when after winnowing the grain is ready, then the grain is taken by the farmers to the wholesale market. There from the wholesale market, the shopkeepers, they come and they take the grocers, they come and take the food, they take the grains, the quantity which they can sell out, that much only they take it from the wholesale market, and from the grocery shop we go and purchase the grains for our homes. Why do we add spices to our food? We add spices to our food to give it a beautiful color, a good color and taste. What is community eating? When many people together from different castes or status, they sit together and eat together the same kind of food, that is known as the community eating. What is the midday meal scheme? Why was it started? The midday meal scheme was started by the government for the government schools because there many children are such who cannot bring healthy food daily. So this midday meal scheme was started by the government so that it encourages the children to come to school daily. That's why this was started. Now children, activity. Why are different crops grown at different times of the year? Because different kinds of crops, they have a particular time to grow. That's why they are sown in the different times of the year. Now collect different types of pulses, seeds and spices. अभी आपने pulses, seeds और spices के बारे में पढ़ा. तो कुछ pulses, seeds और spices collect कीजिए. Put them in small polythene packets. The zip pouches are there, small zip pouches. Put them in it and staple them. Fine, so that they don't come out. Paste these pouches in your scrapbook. अब इन pouches को अपने scrapbook में paste. Paste pictures of any 5 perishable and non-perishable food items. Do you remember what are perishable and what are non-perishable food items? Perishable food items are those which gets destroyed very soon, and non-perishable, they stay for a long time. Discuss on the topic community eating, promotion, the concept of equality. From community eating से कैसे equality का वो बढ़ता है, the equality increases. Just sit and discuss with your friends because you have just read about the community eating. Make a menu of dishes you want to have on your birthday party, in your cousin's wedding party. अब आपका बर्थडे आ रहा है, आपको बर्थडे पार्टी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, what all you want to be prepared, तो उसका एक मेन्यू बनाइए. And your cousin's wedding party is also there,
तो उसका भी you have to make a menu that what all things do you want, breakfast में क्या चाहिए, lunch में क्या चाहिए, dinner में क्या चाहिए, that jot down the menu of these two occasions. Fine. So here we end the chapter, children. I hope you had a good time reading this chapter. So stay excited for the clamp of another video. I'll be back soon with something new, something interesting for you. Till then, bye.